Good morning, all. Good morning, sir. Then we are discussing about the pumping lemma. Hello, am I clearly audible? Yes, sir, you're Then we are discussing about the pumping lemma in the previous class. yes, sir. Yes, Pumping sir. lemma Then can you say me why we use the pumping lemma? to prove something. The regular expression which is we can't Regular form, expression. the language which we can't form in the finite automata. तो क्या करूंगा उसे लेके? Why to use? What is the use of pumping lemma? Sir, we just want to prove that if the language is not regular, then we use. If the language is not the regular, then we use means No, sir. basically use the pumping lemma to prove a language is not regular. Yes, sir. Yes, sir. We use the pumping lemma to show that a language is not regular. Okay. And in the previous class, basically we have gone for the statement of pumping lemma. That what the pumping lemma states. That already we have gone for. Okay. We have gone for the three rules or three postulates of the pumping lemma that we are saying that. Again, I'm revising it, then I'll move next. And the pumping lemma basically tells us that if there exists a constant n for a language L, and n is called the pumping length, where I can say n is the number of states in the finite automaton that implements the language L, such that we'll consider a string W, or I can say for every string W,
in L, the mod of W will be greater than equal to N, and we can break the W in that case into three parts. That is, one is X, the other one is Y, and the next one is Z, such that the mod of Y will be greater than equal to 1, mod of xy less than equal to the n is the pumping length, and for all k greater than equal to 0, x y to the power k z is also in the language L that we have considered. Then this is the basic pumping lemma that we have studied. And remember these three rules you have to remember. Now I am going to prove some languages are not regular using this pumping lemma. Using the pumping lemma, we are going to prove that some languages are not regular. I think the screen is visible to you that I have shared with you. Hello, Yes, sir, it's a black screen for me. black screen Yes, sir. or white screen? Now, sir, why? तो इसमें black हो गया था. Yes, sir, Yes, sir. black. बीच में black हो गया. That means we have to now go for proving some languages are not regular. Then how to go for proving that the languages are not regular? Then before proving anything else, I want to explain you the steps involved in proving. That means how to prove. And moving for the steps and moving for the lines, pumping lemma is very useful to prove whether regular or not. To perform this, following steps are used. Then what are the steps? So let you are going to prove that the language L is not regular
In that case, what are the steps that will follow? Basically, you will do it by using the method of contradiction. Basically, you will do it by using the method of contradiction. Then in the first step, you have to assume the given language L is regular. Okay, what you have to prove? Not regular. And hence you will initially assume that the language L is regular. Small l be the number of states in the corresponding finite automata that recognizes L. Got it what I explained? Initially assume that the language L is a regular language, and what you have to do? You have to consider the pumping length is the number of states in the finite automata that implements or that recognizes or that accepts the particular language. Then moving next, once it is over, you have to choose a string W such that mod of W will be greater than equal to N. Then use pumping lemma to write W as X, Y, Z with the conditions mod of xy less than equal to n and mod of y is is greater than 0.
Then moving next, find a suitable integer I such that x y to the power I z x y to the power I z does not belongs to L. Because if it will belongs to L, then it is regular. But what we have to show that it is not regular, that is this condition we have to make it false. This contradicts our assumption and hence we can say that L is not regular. Hence L is not regular. Okay, this is the basic steps that we have to follow. All of you are listening? Yes, sir. Okay, then listen. Basically, here the method used is known as the method of Contradiction. 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 That means initially, whenever you are proving something else, you have to assume that It that is is true. That is true. Then you have to move further, and finally, you have to get the result as false, and we can say we are contradicting our assumption. And similarly, here what you have to do, you have to assume that the language is regular. If the language is regular, then we can implement a finite automata for it. We are saying that the finite automata is designed with n number of states. The finite automata is designed with n number of steps. And here we are considering n is the pumping length for the particular language for which the automaton is designed. That means if we are going for any language for that have designed a finite automata M, then the number of states in M is the pumping length of it. We have to go for considering a string where the string length is greater than or equal to the pumping length. Now we can divide the string into three parts, x, y, and z, where I can say the x and z are linear part and y is the looping part. And finally, we have to show that x, y to the power any value z belongs to the language. And here our basic goal is not to show accepted, to show rejected. That means we have to choose a value of I
in such a way, value of I in such a way that x y to the power I z will not be there in the language. Okay. Anyone want to ask anything else? Anyone want to ask anything else? Then I'm going to. तुम लोग हो कि नहीं रिप्लाई करो मुझे पता नहीं चला यू आर देयर और नॉट Yes, sir. Yes. ऐसा इतना जब भी पूछ रहा हूँ तुम लोग सो जाते हो क्या तुम लोगों को रिप्लाई क्यों नहीं आता है सर अगर कोई पूछेगा इसलिए चुप. then I am going for a question that we have to prove the question is so that the language L is equal to 0 to the power n 1 to the power n such that n greater than equal to 1 is not regular. Getting the question? Getting the question? I have given you a language. You have to prove that is not regular. Then how I'll start? How I'll start? Take this language as regular. You have to take this language as regular. Like, That means I have to write let L is regular language. Yes or no? Let L is regular language. The finite automata has n states that accepts language L that accepts language L understood what I have done
Initially, I have taken the language is regular. Then I am saying if I will implement the particular language with finite automata, then the automata or the machine will have a number of steps. Now moving for the case to consider the string. Let I'm going for the string w is equal to 0 to the power n 1 to the power n. Then what is the mod of w? What is mod of w here? 2. Ankit, Yes, sir. what is mod of w? जो पूछ रहा हूँ तो एक साथ आंसर दे सकते हो. माइक कितनी बार ऑफ ऑन क्यों हो रहा है? What is mod of w? अरे जैसे यस सर बोल दे तो आगे तो बोलो. टाइम Two. क्यों वेस्ट कर रहे हो? हाँ? Two. Sir, Two. 2. Yes, sir. खुशी, Yes, sir. what is mod of w? Set 2. सबका मोड कैसे 2 आ जा रहा है? एक ने बोला है, इसलिए सबका 2 आ रहा है क्या? अमृत, Yes, sir. 2. 2. संदीप, संदीप में से वो चला गया. आशुतोष, Yes, sir. क्या होगा? mod of w कितना आएगा? So greater than equal to 2. greater than equal to 2. राजेश्वरी, अरे mod of w का मतलब समझ रहे हो ना? नहीं. what do you mean by mod of w? शीर्षक, Sir, yes. mod of w का मतलब क्या है? सर W जो होता है वो हमारा मतलब कि स्ट्रिंग होता है और mod of W means the number of inputs. नंबर ऑफ इनपुट्स mod of w होता है. यहाँ पे w क्या है? what do you mean by w? अंजलि, So string W. प्रत्युष पटेल, what do you mean by mod of w? अरे mod of w का मतलब बोल. इतना देर से पूछ रहा हूँ. एक काम करता हूँ, जो लोग यहाँ पे हो, नाम दिखा रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, उसका माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नेटवर्क है नहीं है, आई विल नॉट केयर, आई विल जस्ट मेक हिम आउट. क्योंकि जब अटेंडेंस देता हूँ सबका माइक काम करता है, मगर जब मैं पूछ रहा हूँ सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है. प्रत्युष पटेल, रिप्लाई और आई एम मेकिंग यू आउट. यस सर 2 होगा सर. क्यों होगा? मैं पूछा क्या? मॉड ऑफ डब्ल्यू का मतलब क्या है? सर डोंट नो सर. डब्ल्यू क्या है?
W. क्लास में हो ना, जो बोल रहा हूँ सुन रहे हो? मुझे तो वो भी नहीं लग रहा है, क्योंकि डब्लू क्या है मालूम नहीं, इतना सारा लिख रहा हूँ मैं। तुम लिख रहे हो वो भी मुझे डाउट हो रहा है, नहीं लिख रहे हो। तो W string है सर। वो ढूंढना पड़ रहा है कहाँ पे लिखे हो डब्लू का क्या है। प्रॉब्लम तो वही है, डब्लू स्ट्रिंग है वो सही है, मगर वो बोलने के लिए तो वो इतना ढूंढना पड़ रहा है। निया रंजन पल्लई, Yes, sir. व्हाट डू यू मीन बाय मॉड ऑफ डब्लू? So it's the length of the string W. Very good. It's the length of the string W. Here, what is the string? So 0 to power n, 1 to power n. Then, what is the mod of that W? Mod of So 0 to 2, the power n, or 1 to the power n. Then, that will be 2 to power n. 2 to the power n. Mod of W. 0 to the power n, 1 to the power n is the string. Can you explain what do you mean by 0 to the power n, 1 to the power n? What will be the string? So it can be 0 1, 0 0 1 1, 0 0 0 1 1 1, like that. I'm not asking that like that. I'm asking the entire string in form of 0 to the power n, 1 to the power n. What is that? Tell me in a sentence. What will be the string? So the string containing 0 and 1, and the appearance of 0 and 1 is greater than 1. That is, simply tell me n times 0 followed by n times 1. Yes, sir. N times 0 followed by n times 1. Then what will be the mod of W or length of W? ज्योतिष ने जो बोला वो हमेशा सही होगा ऐसा नहीं है। सबको पूछ रहा हूँ, ज्योतिष ने शुरू किया 2 तो सब बोल रहे हो 2। क्वेश्चन क्या है मालूम नहीं, आंसर क्या है सोच नहीं रहे हो। उसने 2 बोला है तो सही होगा, ऐसा नहीं होता है। मॉड ऑफ डब्ल्यू क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बताओ। बोल यार, तुझे पूछा तू ही बता। Yes, sir. तो मॉड ऑफ डब्ल्यू कितना होगा, क्यों होगा? So 2n होगा. 2n होगा था, 2 टू द पावर n कहाँ से हो रहा था? So Hmm. सर मैंने ठीक है, होल का एन ले लिया. हाँ ठीक है, अभी जाके सही बोला। अंडरस्टूड। हियर द मॉड Yes, ऑफ sir. डब्ल्यू विल बी 2n। 2 कैसे होगा यहाँ पे? Mod of W will be equal to 2n, not 2. That is, depending upon n, it will be different. The mod of W will be 2n because n times 0 followed by n times 1. 0 n बार है, 1 उसके बाद n बार है, तो दोनों मिलके n बार 2n times है। And hence the mod of W will be equal to 2n. समझ में क्या बोला? n times 0 followed by n times 1. यहाँ पे n बार 0 लिखा, फिर n बार 1 लिखा, तो n बार 2 n मिलने से क्या होगा? It will be 2n. And this 2n will be the length of the string W. And this 2n is less than n. That is satisfying my condition. The condition was mod of W should be greater than equal to n. Yes, I have it in the note. Mod of W should be greater than equal to n, and here it is greater than n. It is greater than n. That is, my condition is satisfying. Consider a string whose length
is greater than or equal to the pumping length. And here the pumping length is n. I have taken. Then by pumping lemma, by pumping lemma, we can write by pumping lemma, we can write W is equal to X, Y, Z. जो स्ट्रिंग था उसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ. W equal to X, Y, Z such that mod of xy less than equal to n and mod of y greater than equal to. Getting it what I have to do? I'm not going for the result. I am only showing what I have to do. Now we have to find I such that x, y to the power I, z does not belongs to L to get contradiction. And to do this, basically what I have written here, the W can be divided into 3 parts, that is X, Y, Z. W can be divided into 3 parts, that is called X, Y, and Z. Then how to divide the W? That I am going for here. While I am dividing W into X, Y, Z, the basic concentration on Y and why to go for Y, I have already explained yesterday because this is the looping part. The string Y can be any one of the three possible forms. क्या है बता देता हूँ. The first one I am saying the string Y constructed by using only zeros. It means
y is equal to 0 to the power k. For sum k greater than equal to 1. मतलब क्या है समझा रहा हूँ, पहले लिख लो उसके बाद समझा रहा हूँ. Then in second point I am saying the string y constructed by using only zeros. गया था, अब only ones. It means y is equal to 1 to the power k. Or sum k greater than equal to 1. Moving further, point number 3. The string y constructed by using both symbols zeros and ones. It means y is equal to 0 to the power j, 1 to the power k. For sum j and k greater than equal to 1. Then these will be the basic conditions by which we can divide the entire one into three different parts. तो कैसे मैं इसे जस्टिफाई कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? What do you mean by this? Explaining. In the first point, what I have written? Y is of only zeros. Then what is the string here? The string W. What is that? W is n times 0, n times 1. Yes or no? Yes, sir. Then I have to divide it into three parts: x, y, and z. Where x and z, these two are the linear parts. कल बोला था फिर आज बोल रहा हूँ. This x and z, these are the linear part. And y is the looping part. क्यों भी बोला था? Because whenever you are going to implement a string or recognize a string with a finite automata with the string length same as the number of states or greater than the number of states, then we must have to follow a loop. And hence the y is the looping part.
Then going for this, how to divide it? मुझे बोलो इस स्ट्रिंग को मैं डिवाइड करूंगा XYZ में, कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? कुछ भी तुम्हारे हिसाब से बोलो. अंजलि बोलो, how can you divide it? Sir, अंजलि hello. गौरव. Yes, हाँ, sir. hello बोलो. If I'll give you don't think about question, you just tell me. I will give you a string 0 to the power n, 1 to the power n. I'll tell you that divide the string into 3 parts. Then how can you divide it? Sir, तुम्हें एक स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करना नहीं आएगा. सब्जेक्ट भूल जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ. एक स्ट्रिंग मैंने तुम्हें दिया 0 to the power n, 1 to the power n. तो तुम्हें बोला कि इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दो. डिवाइड नहीं कर पाओगे. मतलब सर मतलब कि कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं. कुछ भी डिवाइड कर सकते हो. कुछ भी तुम्हें दिया तो डिवाइड करना तुम पे है ना. तुम डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड कर सकते हो? मुझे बोलो. सर एक को 0 0 ले लेंगे, एक को 0 1, दूसरे को फिर 1 1 ऐसे ही करके. मुझे यहाँ पे 1 पे मैंने नहीं n पे लिखा है, तो n पे मुझे बोलो. सर एक 0. ठीक है, नहीं बोल पा रहे हो तो ऐसे बोलो कि तुमने क्या बोला, कैसे डिवाइड करोगे. सर 0 0 0 1 और 1 1. मतलब पहले x y जो है और या फिर z है, मैं क्या बोला हूँ उसमें जीरोज है, वंस है. तो मुझे बोलो x में क्या लोगे, जीरोज और वंस. zeros है. तो x में जीरोज लोगे. हाँ. तो मैं यहाँ पे, hey hello everyone listen, what he is saying that I'm doing here, I'm taking the zeros in x. Okay, I'm taking the zeros in x. x में क्या रहेगा, जीरोस रहेगा. y में सर सोच लो, y में भी मैंने जीरो ले लिया. ओके. तो बचेगा क्या? 1 तो वंस. पूरा का पूरा वंस को मैंने z में ले लिया. तो ओके. वंस कितना है? n. वंस कितना है? 1 to the power n है. तो पूरा का पूरा 1 to the power n को मैंने z में ले लिया. दो जीरोस था, उसमें से k नंबर ऑफ जीरोस को मैंने y में लिया. तो x में कितना बचेगा? n minus k. Everyone got it? Everyone got it? Yes, sir. ये एक तरीका है. जब मैं वो क्या बोल रहा हूँ, y में मैंने सिर्फ जीरो ही लिया है. और कैसे ले सकता हूँ? बीच में 1 ले लेंगे. बीच में 1 भी ले सकते हैं कि मैंने x को पूरा जीरो ले लिया और y z दोनों को मिला के मैंने बोला कि 1 है. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि डिवाइड मैं कर रहा हूँ, मेरा जैसा मर्जी मैं वैसे डिवाइड करूंगा. और पहले जैसे इसने बोला था, अंजलि ने, व्हाट ही टोल्ड, व्हाट्स ही टोल्ड, शी टोल्ड द फर्स्ट वन कुछ जीरो ले लूंगा, उसके बाद बीच में जीरो भी ले लूंगा, 1 भी ले लूंगा, आखिर में मैं 1 ले लूंगा. तो ये कैसे होगा? ऐसे होगा, हाँ कि नहीं? पहले x में मैंने जीरो लिया, y में जीरो भी था, 1 भी था, z में भी कुछ 1 था. क्योंकि जब मैं स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहा हूँ, इट इज अप टू मी, हाउ विल आई डिवाइड. बट बेसिकली आई कैन गो into any one of these three ways. और कोई वे नहीं है, इन तीनों में से मैं कोई भी वे ले सकता हूँ. समझ पाए? हेलो. Yes, sir. Yes, और किसी का भी कुछ डाउट है? इतना समझ पाए डिवीजन मेथड? yes.
Then you can follow any of the division. I am solving it one by one. कोई भी ले लो, कैसे करना है. सोचो मैंने केस 1 लिया. Then how to prove it? अभी तक मैंने प्रूफ शुरू नहीं किया है. अभी प्रूफ कर रहा हूँ. केस 1 में मैंने क्या किया है? 0 to the power n minus k, 0 to the power k, 1 to the power n. Getting what I am saying? The पहला केस. Yes, sir. Then what it is saying? Y contains only zeros. It is saying that y contains only zeros. Then if y contains only zeros, that means here I'll write by pumping lemma we can consider x is equal to 0 to the power n minus k, y is equal to 0 to the power k, and z is equal to 1 to the power n. Here I am dividing it. 0 to the power n, 1 to the power n can be divided as 0 to the power n minus k. This is w is equal to this one, x is equal to this one, y is equal to 0 to the power k, and z is equal to 1 to the power n. Okay. Yes, sir. Then you have to check the pumping length for all k greater than equal to 0, sorry, greater than equal to 1. क्या होगा? Mod of y greater than 0 होगा कि नहीं? k का वैल्यू अगर Yes, sir. 1 हुआ तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0 होगा. तो y cannot be epsilon. y epsilon नहीं होगा तो mod of y 0 नहीं होगा. Mod of y will be always 1 or more. Then mod of xy will be कितना होगा? And n which is less than equal to n. हो रहा है कि नहीं? ये पंपिंग लेमा का सेकेंड कंडीशन है. इसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना है. हाँ कि नहीं? This is first condition. You can check. This is first condition. Satisfied. Now second condition satisfied. We have to think of the third condition. We have to think of the third condition. Third condition is for I equal to 0, x, y I to the power I z is कितना होगा? 0 to the power n minus k, 0 to the power k to the power 0 followed by 1 to the power n is equal to 0 to the power n minus k, 1 to the power n. हाँ कि नहीं? Something power 0 is 1. Getting what I am saying? Yes, sir. This is a contradiction. As 0 to the power n minus k
1 to the power n does not belongs to L as number of zeros are less than the number of ones for k greater than equal to. Okay, here I have proved that this is a contradiction. With this I am concluding this class. Next class will start from the same position. Just a second, I am giving you the link of Jyotish. Can you write your group mail again in the chat box? Yes, sir. Please write. ये क्या हुआ? लिखो एक बार. Sure, sir. Just. I have sent the link to your group mail ID. Please check and accordingly attend the exam. Okay, sir. Have you received it? Then respond to roll calls. टाइम लेट हो गया है, थोड़ा जल्दी रेस्पॉन्ड करो. अभिजीत, Present, sir. आदित्य, आदित्य, absent. Alisa, Alisa, आदित्य भी absent. Alisa भी absent. अमृत, Yes, sir. अमृत, Yes, sir. अनन्या, Present, sir. अंजलि, Present, sir. अंकित, अंकित, अनूप, आशुतोष मिश्रा, Yes, sir. आशुतोष सिन्हा, अतीश राज, अतीश राज, अभिशेखर, 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 आयुष्मान रॉय, Present, sir. चंद्रकांत, Present, sir. देवज्योति, Present, sir. दिव्य दर्शन, Present, sir. दीक्षा, Present, sir.
हरिओम, ज्योतिष, ठाकुर, Present, sir. Jyotish, present, sir. ठाकुर, खुशी, Present, sir. कृष्णा मुरारी, कृष्णा मुरारी, कृष्णा सामल, Present, sir. नियार पलई, Present, sir. निखिल कुमार, निकिता रोजालिना, सर अभिषेक प्रेजेंट। जो चला गया अभी मैं देख नहीं सकता। पार्थ, Present, sir. प्रज्वल, प्रेजेंट सर। प्रत्युष, प्रत्युष, Present, sir. प्रियव्रत, Present, sir. पृथ्वीराज, राहुल मुखर्जी, राहुल सेनापति, sir. Yes, sir. Yes. राजेश पाड़ी, राजीव दुबे, Present, sir. रेहान, रेहान, रूपम मेहर, Yes, sir. संबित साहू, Present, sir. संदीप मिश्रा, सत्यनारायण सिंह, Present, sir. शिखर स्वरूप, Present, sir. श्रुति नम्रा, Present, sir. शिबलू, प्रेजेंट सर। स्वीकृति, Present, sir. शीर्षक, Yes, sir. Yes, sir. स्मृति, स्मृति, यस सर प्रेजेंट सर। सौम्य महापात्र, प्रेजेंट सर। तान्या, Present, sir. विक्रम, विक्रम। Present, sir. ओके, अभी किसका एब्सेंट है मैं बोल रहा हूँ, अगर प्रेजेंट हो बोल दो। संदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा नहीं। रेहान अहमद खान, रेहान अहमद खान। राहुल मुखर्जी, राहुल मुखर्जी। निकिता रोजालिन, निकिता रोजालिन। कृष्ण मुरारी, दिव्य प्रकाश नायक, Present, sir. Divya Naik present. हाँ, मैंने पढ़ दिया। अभिशेखर, अतीश राज, आशुतोष सिन्हा, अंकित दास, अलीशा पटनायक, आदित्य। इतने लोग एब्सेंट हो। Then those who have finished the assessment, they may leave. Only 2 responses I got, not more than that. मैं लिंक बंद कर दूंगा, थोड़ा जल्दी असेसमेंट देके जाओ। थैंक यू, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Have a nice day. Please, Raj, Rahul Mukherjee. हेलो सर। हाँ, बोलो। सर लास्ट क्लास जो आपने कल लिया था सर, उसमें मैं प्रेजेंट था सर। मैंने 2 घंटा क्लास किया और क्विज भी दिया। मैं आपको एक्चुअली अटेंडेंस के लिए चैट बॉक्स में लिख लिया था तो सर। और एक चैट बार बॉक्स में लिखे हो तो प्रेजेंट होगा, ये सर, ये सर, थैंक यू सर। क्योंकि मैं अभी वही कर रहा हूँ।
और तीसरा अजय के 3 बार नाम बुलाया, नहीं अटेंडेंस दिया, अभी बोल रहा है कि चाहिए, तो उसका भी डाल रहा हूँ। चैट बॉक्स में लिखे हो तो मैं रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ, ठीक है। जाओ यस दूसरा क्लास होगा, जाओ। ठीक है सर। थैंक यू। जी, आशुतोष सिन्हा, तीसरा। हाँ बोला ना, जाओ। ये तो कब से बोल सकता है। टेस्ट कंप्लीट कर दो, वो तो लिंक तुम्हारे पास है। जाओ जाओ, दूसरा क्लास अटेंड करो, टेस्ट भी कंप्लीट करो, जाओ। थैंक यू।